Hello guys, welcome back. And today we will see how to get the data from the API and map to the model in Flutter. And ये हमारी simple application है. And this will going to be our API JSON placeholder. तो सबसे पहले मटेरियल ऐप तो मैं करता हूँ यहाँ पर प्रोवाइडर की प्रोवाइडर यूज़ नहीं करेंगे. सिंपल हम मटेरियल ऐप यूज़ करते हैं. एंड देन हम बॉडी सिंपल सा इसमें हम टाइटल इसका सेट कर देते हैं. टाइटल में हम देते हैं इसका नाम फैच डेटा या एंड डीबग पैनल को फोर्स कर देते हैं. ये थोड़ा वेird होता है. देन होम प्रॉपर्टी में हम एक क्लास देते हैं, इसका नाम रखते हैं इसका होम या और ये क्लास हमें क्रिएट करनी होगी होम डॉट डॉट और प्लस विजिट एंड देन इसका नाम होगा होम. देन हम इसमें स्कैफोल्ड लेते हैं. स्कैफोल्ड में ऐप बार लेते हैं. ऐप बार में ऐप बार विजिट का यूज़ करके हम टाइटल देन टेक्स्ट विजिट का यूज़ करके टाइटल सेट करेंगे इसका लेट्स से फैच डेटा या ओके होम सेम इंपोर्ट करते हैं या वी चेंज ओके जस्ट नाउ. हाँ मैं क्या करता हूँ यहाँ पर मैं एक मेथड बनाता हूँ. यहाँ नया अलग ही बनाते हैं और इसका पहले मॉडल क्रिएट करते हैं. नहीं मॉडल बाद में क्रिएट करेंगे. पहले हम डेटा बेस डॉट डॉट या इसमें हम एक क्लास बनाते हैं क्लास और इसका नाम डेटा बेस मर्जी कुछ भी रख लो. और एक मेथड बनाता हूँ स्टैटिक ओके स्टैटिक ध्यान देते हैं. बाद में ये लोग चेंज कर लेंगे. स्टैटिक देन दिस गोइंग टू बी फीचर स्टैटिक हटा देते हैं. दिस गोइंग टू बी फीचर क्योंकि डेटा आने में टाइम लगेगा तो हमें इसी का वेट सिंक्रोनाइज बनाना होगा. फीचर इसका नाम रखते हैं हम गेट डेटा या नाउ दिस गोइंग टू बी एसिंक. देन ट्राई कैच का यूज़ करना होगा ताकि कोई हमें एरर नहीं आए. और देन हमें क्या करना है पहले मैं क्या करता हूँ HTTP पैकेज इंस्टॉल करता हूँ या फ्लटर अब एड HTTP या एडेड. नाउ import it ऐसे नहीं import HTTP या इसको मैं एज HTTP या ट्राई कैच में मुझे क्या करना है HTTP का यूज़ करके हम डेटा फेच करते हैं. रेस्पॉन्स एंड अवेट HTTP डॉट गेट में मैं URI का यूज़ करके URI डॉट पार्स या और यहाँ पर सिंपल स्ट्रिंग पास करनी है. एंड देन या जो डेटा होगा हमें रेस्पॉन्स डॉट रेस्पॉन्स फाइनल एंड या नाउ व्हाट कैन आई डू मैं रेस्पॉन्स को आई थिंक प्रिंट करता हूँ. पहले देखते हैं क्या रेस्पॉन्स आता है. रेस्पॉन्स डॉट बॉडी या एंड कैच में हम करते हैं प्रिंट डॉट टू स्ट्रिंग. ओ कम ऑन. और इसे हम क्या करते हैं होम में इनिट स्टेट का यूज़ करके इसे कॉल करते हैं इनिट स्टेट या और पहले हमें यहाँ पर आई थिंक डेटाबेस इसका इंस्टेंस क्रिएट करना होगा डेटाबेस या नाउ using instance I can call get data yeah. Now we are good to go. Let restart this. Yeah, we get the data here now. Yeah, now हमारे पास ये लिस्ट ऑफ जेसन है. इसमें क्या करते हैं यूजर आईडी एंड टाइटल एंड बॉडी है. तो इसका हम मॉडल क्रिएट करते हैं. पहले एक यहाँ मैं मॉडल क्लास बनाता हूँ मॉडल डॉट डॉट फाइल एंड इसमें क्लास हम रखते हैं इसका नाम लाइक custom. I think this is going to be good and मुझे इसमें final string this is going to be user ID and then final string is going to be ID again final string and this is going to be title again we have final then we have body this also going to be बॉडी. ये हमारी बॉडी होगी और हमें क्या करना है कंस्ट्रक्टर बनाना है आई थिंक
एडिट या, और आई थिंक इस तरह से नहीं करते हैं, हम पैरामीटराइज करते हैं और रिक्वायर्ड का यूज़ करके रिक्वायर्ड दिस डॉट यूजर आईडी, नाउ दिस रिक्वायर्ड this dot id, then required this dot is going to be title, it's now required this is going to be, yeah, this is going to be our body. now ये कंस्ट्रक्ट होगा, एक मुझे एक वेरिएबल फ्रॉम जेसन, एक मैं फंक्शन बना हुआ फैक्ट्री एंड इज गोइंग टू बी कस्टम डॉट फ्रॉम जेसन, या पैरामीटर इसमें एक वेरिएबल ये मेथड होगा, और देन ये, और हमें पैरामीटर एक्सेप्ट करना है यहाँ पर। लेट्स से एक होगा हमारे पास मैप, या, और इस हमारा पहला होगा स्ट्रिंग और दूसरा होगा हमारा डायनेमिक। दूसरा भी आई थिंक या डायनेमिक करते हैं, देन इसका नाम हम जेसन रखते हैं एंड रिटर्न करते हैं हम यहाँ से रिटर्न कस्टम कस्टम, एंड देन आईडी हमारी होगी हमारी, या, जेसन यूजर आईडी, या सेम विद id this is going to be JSON id, then also with title this is going to be JSON title, again body going to be body JSON body, yeah, we have this model class. Now what can I do, yeah, in body I can simply use feature builder, I think, yeah, builder, then context, we are not going to use feature builder, we will use list view builder, या आइटम बिल्डर में हमारे पास होगा कॉन्टेक्स्ट एंड देन इंडेक्स, या, एंड देन रिटर्न सिंपली वी कैन रिटर्न list style. Okay, I think there is an error. I think we have missed something. Trying to make, I think this, yeah, this is going to be this like return, and we can simply return this style. Yeah, now one thing we have to do, we have to, yeah, in title we can give it, we are missing something, I think, yeah, then we have to give it like its item count, and this is going to be, we have to make a variable here first, yeah, like post list of custom model, initially it's null, its name, we forget that, like post. Now what can we do, post dot length, yeah, now title going to be, we have to make it here first, final item, then post index, जो भी उस इंडेक्स पर आइटम होगा जेसन होगा, मुझे पहले आइटम चलेंगे, देन आइटम dot its, I think, title, yeah, I have to use text widget first, I think, text widget, then item dot its title. Now okay, this is going to show error, I think, then first of all I have to post, then make it, I think, await, and make it async. I think this is going to show error, no, there is no error, yeah, I, and in database we have to return return response dot body, just wait, I have to make something different, uh, for in element, yeah, item, then collection होगा हमारा response dot body, okay, we made a mistake, what can I do, final data equals to JSON big code, and then response dot body, yeah,
Now we can simply use data here, and in body we have to come on, we have to use post. Oh, sorry, custom. And I think we made a mistake something. We made a yeah, custom dot from JSON, and this is going to be item. Yeah, this will return item that is custom. I think this will return custom, and this will our post. And then we have to I can make a final post list of post, list of custom. I confused because I made and then all posts. Initially this is going to be empty. Yeah. Now I can post, then all posts dot add, simply add the post, and after this return simply all posts. Now we have all the posts, and here we have all posts. We are simply inside. Now first I restart the application. Yeah, this gave me the error. If our post, I think this is going to be empty here. Uh, let again, yeah. Okay, what can I do? I made another function, void get data, made it async. हम इसे async बनाते हैं ताकि हम डेटा इजिली फाइंड कर सकें and make it post simply, yeah, simply cut it from here, paste it here, and remove it from here, then call get data. Let's see what happen again. Yeah, null. Okay, this is giving error again. I don't know what is the error, like database or get await assigning in post. Yeah, I have to make a loader here first. Our post is null, and then what I do, I can simply make it here bool loading just to false. Yeah, make it loading false, and then make loading true. Simply use, I think, set state here. Now it's loading. Yeah, it is loading. So let's say center widget, then child may circular progress indicator. If not, we can simply use this our widget. Now I think this will work. Now restart it. Again we get the error. Post null is not the subtype of string. Okay, I think user ID title word t. Okay, let print data. Now start it again. Yeah, we get the data, but type int is not the subtype of string. I know. Make it, yeah, int. Now this will work fine again. Now, okay, again, int is not the subtype of string. Okay, user name and user ID also is this type of int. Now again, I will restart. Yeah, this time I think this will work. Okay, actually we get the data, but can make it set state.
loading false, and again copy it and paste it here. Now let's see what will happen. Restart it. Okay, I made a mistake here. Have to make it true here and make it false here. My bad. Now make it restart. Yeah, we successfully get the data again if I refresh it. Yeah, now what can I do? We ask in its title if we can give title subtitle text. आई थिंक अगर हम सबटाइटल देते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा लंबा टेक्स्ट था, तो बहुत ही नीचे तक हमारी विजिट जा रही है। ओके, एंड वी आल्सो यूज लीडिंग। एक्चुअली यूज़र नेम और आईडी सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, सर्कुलर अवतार का यूज़ करते हैं यहाँ पर, और चाइल्ड में हम टेक्स्ट विजिट यूज़ करते हैं। टेक्स्ट विजिट में हम क्या करते हैं, आइटम डॉट आईडी या यूज़र आईडी यूज़ करते हैं, एंड स्ट्रिंग यूज़ कर करके आई थिंक टू स्ट्रिंग या वन वन क्यों आ रहा है यहाँ। Okay, again 2, 3, 3. I think something. I think ये ऐसा ही है डेटा, तो कोई नहीं, बट आई थिंक आई कैन आल्सो यूज की हियर, एंड की will be item dot id dot to string. No, let move this now. If I restart it, yeah, this is how we can fetch the data from the API and map to the model. Hope you understand this. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।